In today's class, it is chapter number 10, tens and hundred. In last class, we learned about the same chapter, and in that class, we learned about the many different design by using this given number. Then we discuss about the sports day, and then we calculate, we compare which jump is longest jump, which jump is shortest jump, and then we find out difference between two jump like that. Some example we discuss. Now in today's class, it is about page number 143. See, this is page number 143. Its heading is here, money from different countries. Money from different countries. See, there are different kind of money of each different country. So that is called currency of country. Currency of that particular country. For example, in India, it is better rupees. It is rupees. So the name of the rupees, name of money of Indian money is rupees. So rupees is currency of India. And nowadays we are not using like this rupees. In the place of this rupees word, we are using this symbol. This symbol, and this is the symbol for Indian rupees. For example, it is symbol of this in USA dollar. So like that, different countries have their different currency, and different currency have their different symbol for their identity. Now in this chapter, one chart of the different countries and different currencies is given here to see money from different countries. So we have to discuss here, and then we have to solve some question, and the rate of that the value of that currency in Indian rupees, it is given here to see. It is country name Korea, the Sri Lanka, Nepal, Hong Kong, the South Africa, China, UAE, USA. It is Germany and England. So these are some examples of the countries here, and their currency's name. It is the name of currency of Korea. It is, see, this is Korea, and name of the money, that currency, it is WON won. WON won. So see, this word is past tense of win, WIN win. But here it meaning or is not win. Past tense of win, it is noun here. It is name of the currency of Korea, WON won. See, it is Sri Lanka, currency of Sri Lanka, it is rupee, but it is SL rupee. Means SL means Sri Lankan rupees. Again, Nepal, it is only rupee. It is rupee, and now see, it is here Hong Kong, the dollar of Hong Kong, the currency of Hong Kong is dollar. It is HK dollar, beta. HK dollar means what? Hong Kong dollar. Then South Africa, it is RAND rand. Then it is China, it is YUAN yuan. YUAN yuan. And then say UAE, it is dirham, DSIRAM. Germany, it is euro. EURO, euro, and see, it is England, its currency is POUND, and USA, it is dollar. It is dollar. So these are the country's name and their currency. Now third problem is here, change in Indian rupee. So see, one table is given here. According to this table, their value in Indian rupees is given here. But dear student, these are the so old rate. Nowadays, the rate of this currency in Indian rupees has been changed here, but now we have to take this rate only for sample, and we have to calculate this some example which are given below this chart with the help of this value. So see, let us try with this value, change into Indian rupees. So won is equal to rupee 0.04. But this value is given in rupees. It is given in rupees. It is one won is equal to 0.04 rupees. Then Sri Lanka, it is 0.37. 0.37. Nepal rupees, it is 0.63. It is 63. And see, Hong Kong dollar, it is 5.10. 5.10. South Africa rand, it is 5.08. Sorry, it is 5.18. Okay? 5.18. And then China yuan, it is what beta? 5.50. And UAE dirham, it is 10.80. 10.80. And Germany, it is euro. Germany का जो euro है बेटा, it is 58.30. 58.30. And England, it is pound. Its value is 77.76. And USA dollar, $1 is there, and that dollar value is 39.70. So these are the value in Indian rupees now.
Now, with the help of this chart, we have to find out the answer of these some questions. I already wrote here the question here now. See first question. What is first question now? See, money of which country will cost most in Indian rupees? Money of which country? मनी ऑफ देखिए, मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट मोस्ट इन इंडियन रुपीज. तो इन लिस्ट में से किस कंट्री का जो मनी है सबसे ज्यादा वैल्यू है इन इंडियन रुपीज. तो सी दिस चार्ट, प्लीज दिस चार्ट, एंड विच वैल्यू इज मोस्ट इन इंडियन रुपीज. सो दिस वैल्यू 77.76, सॉरी 77.70. दिस वैल्यू इट इज 76 है, 76. So 77.76. This value is the most in Indian rupees, and this is the value of what? It's the value of pound, and pound is the currency of country England. So we can write here money of which country will cost most in Indian rupees. देखिए, the question you can write the currency of England will cost. Currency of England will cost most in Indian rupees. Yes, so this is the most value currency according to this table. According to this table here, इस table में जो list दिया है, according to that list only, the currency of this England will be most cost in Indian rupees. That is बेटा क्या लिखूँ यहाँ पर देखिए, POUND pound is equal to rupees 77.76 according to this table here. Now next question number 2. Let it be लिखा है यहाँ पर देखिए, मिथुन अंकल इन अमेरिका हैज सेंट 10 USA डॉलर. मिथुन के अंकल जो अमेरिका से उसने क्या किया, 10 USA डॉलर भेजा है एज अ गिफ्ट के तौर पर. मिथुन यूज दैट 350 रुपीज फॉर ए ट्रिप. उस पैसे डॉलर में से रुपीज 350, ठीक है, डॉलर भेजा लेकिन उसको कन्वर्ट किया रुपीज में, एंड देन उसमें से 350 रुपीज ट्रिप के लिए यूज किए बेटा. देन हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम. उसके बाद 350 रुपीज यूज करने के बाद उसके पास कितना रुपीज बचा रहा बेटा. हाउ मेनी मनी इज रुपीज विथ लेफ्ट विथ हिम. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 USA डॉलर is equal to how many rupees? See this chart. USA dollar is equal to what? 39.70. It is rupees 39.70. Then 10 USA dollar is equal to कितना हुआ? अब 10 US dollar is equal to rupees 39.70 into 10. Okay, 10 USA dollar है, that 10 USA dollar is equal to 39.70 into 10, so it is equal to 3970.00. क्या होगा बेटा इसका आंसर? इट इज सॉरी, ये गलत हुआ, यहां पर देखिए, ये 39.70 into 10, 10 0 0, 10 7 70, 70 से 0 carry 7, 10 9 90 plus 7 97, then 9, 10 3 30 plus 9 39. Your decimal will be here. It is 397.00, so is equal to 397. The total value of 10 USA dollar. So what is this? 397 is total value of 10 USA dollar. Now देखिए, money used for trip is equal to rupees कितना है? It is rupees 350 is equal to rupees 350. Then money left with him. Money left with him is equal to, it is rupees 397 minus rupees 350 is equal to rupees 47. Is equal to rupees 47. देखिए, मनी यूज फॉर ट्रिप कितना? रुपीज 350. मनी लेफ्ट विथ हिम कितना बेटा? तो टोटल मनी 397 माइनस यूज मनी 350, एंड देयर आंसर इज हियर, लेफ्ट मनी इट इज 47. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सी? Majid father is working in UAE.
मजीद के जो फादर है बेटा यूएई में काम करते हैं, ही गेट 1000 दिरहम एज सैलरी, उनको 1000 दिरहम मिल रहे बेटा यहाँ पर. एंड अरुण फादर वर्किंग इन श्रीलंका, ही गेट 2000 श्रीलंकन रुपीज, हु गेट मोर इन इंडियन रुपीज. देखिए दोनों जगह दोनों के फादर, मजीद के फादर और अरुण के फादर, बोथ आर वर्किंग एट इन डिफरेंट कंट्री, दे आर गेटिंग डिफरेंट करेंसी. Majid is getting 1000 dirham and Majid father is getting 1000 dirham and Arun father is getting 2000 Sri Lankan rupees. But now both currency we have to convert into Indian rupees and then we will compare which is more here in Indian rupees. So see, total cost of 1000 dirham in Indian rupees is Indian rupees. तो इंडियन रुपीज में उसका कॉस्ट कितना होगा? देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 dirham in Indian rupees so is equal to total cost of 1000 dirham in Indian rupees is equal to, so see you can do like this, 1000 dirham into, now what is the cost of 1 dirham? What is the cost of 1 dirham? See, you can see this chart and from this chart you can come to know it is 10.80. It is what? 10.80. So value will be in rupees. So see, it is 1000 into 10.80. 10.80. So see, 10. First you multiply by 0, it will be 0, 0, 0. Then multiply by 8, 0, 0, 0, it's 8. Then again multiply by 0, 1, 2, 3, 4 here, and again multiply here now by 1. It is 0, 0, 0, 1. So see it is 0, 0, 0, it is 0, it is 8, it is 0, it is 1. And here decimal point is here. So see it is rupees 10,800.00. So it is equal to 10,800. 10,800. So what is this? Total cost of 10,000 dirham in Indian rupees. Now, अभी total cost of 2000 Sri Lankan rupees. Total cost of 2000 SL rupees in Indian rupees. इन इंडियन रुपीज. ओके, टोटल कॉस्ट जो है बेटा इन इंडियन रुपीज में कितना होगा अभी देखिए इसका. तो क्या हुआ यहाँ पर? टोटल कॉस्ट ऑफ 2000 एसएल श्रीलंकन रुपीज इन इंडियन रुपीज. तो इट विल बी 2000 इनटू एसएल कितना है? सी फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस चार्ट यू कैन सी 1 एसएल मीन 1 श्रीलंकन रुपीज इक्वल टू 0.37. इट इज 0.37. तो मल्टीप्लाई हियर रुपीज 0.37. तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इधर अभी. इट इज 2000 इंटू 0.37, 0, 0, 0, इट इज 14,000. देन सी 0, 0, 0, इट इज 6. एंड सी इट इज 0, 0, 0, एंड इट इज 0. तो सी 0, 0, 0, 4, 1 एंड 0. 7. Okay, it is 1 plus 6, 7. Now decimal point is here. तो क्या हुआ? रुपीज 740.00 is equal to rupees 740. Yes, these are two values now. Now you compare yourself which value is more here. This value is more, and this is the salary of what? Majid father. तो क्या लिखेंगे? Who get more Indian rupees as salary? तो Majid father gets more salary, more Indian rupees as salary. मस्जिद के फादर जो है बेटा, मस्जिद के फादर को क्या था? इंडियन रुपीज में ज्यादा सैलरी मिल रही. मस्जिद फादर गेट मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी. नाउ कम क्वेश्चन नंबर डी. सी what is question number D? Lina's auntie bought a present for her from China. लीना की आंटी ने क्या किया? उस लीना के लिए चाइना से प्रेजेंट लाया.
इट्स कॉस्ट 30 यॉन, उसका कॉस्ट कितना था 30 यॉन, फाइंड इट्स कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। तो सी इट इज 1 यॉन इज इक्वल टू रुपीज कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियन रुपीज देखिए बेटा, दिस इज द यॉन इज करेंसी ऑफ चाइना एंड इट्स वैल्यू इन इंडियन रुपीज इज 5.50। सो व्हाट वी हैव टू डू, 1 yuan is equal to rupees 5.50 and then its cost is 30 yuan, तो फिर total cost of 30 yuan, total cost of 30 yuan is equal to rupees 30 into 5.50 तो से इस वैल्यू निकालेंगे इंडियन रुपीज में 5.50 इंटू 30 कीजिए। सी दिस इज व्हाट 0 0 0 and see it is 0 3 5 15 carry 1 15 plus 1 16 0 0 5 6 1 decimal point is here, it is 165.00 means its value is only 165। now next question देखिए, नंबर ई क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आस्था वांट्स फ्रॉम हांगकांग HK डॉलर एंड वोन। आस्था को कुछ वोन भी चाहिए और कुछ हांगकांग डॉलर भी चाहिए। ओके, कुछ वोन चाहिए और कुछ हांगकांग डॉलर चाहिए। अब देखिए हाउ मेनी वोन कैन बी चेंज फॉर रुपीज 4 and 40। तो उसके पास जो 4 रुपीज है और 400 रुपीज भी है, 2 रुपीज है, 4 and 400। तो बाय चेंजिंग दिस 4 रुपीज एंड 400 रुपीज हाउ मेनी हांगकांग डॉलर कैन सी गेट, उसको कितना हांगकांग डॉलर मिल सकता है। सॉरी इट इज, हाँ ओके, यहां पर लिखा बेटा हाउ मेनी वोन कैन सी चेंज, तो वो कितना वोन्स ले सकती है। तो देखिए 1 वोन इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोन इज इक्वल टू रुपीज 0.04। 0.04 इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये इट इज 4.100 इज इक्वल टू 4 पैसे, इज इक्वल टू 4 पैसे। अब देखिए नंबर ऑफ वोन, नाउ सी रुपीज 4 इक्वल टू रुपीज 4 क्या हुआ बेटा, इट इज 4 into 100 इज इक्वल टू 400 पैसे हुआ, ये इज इक्वल टू कितना हुआ ये आपका 400 पैसे। 4 रुपीज में कितना होता है 400 पैसे। फिर से नंबर ऑफ वोन फॉर रुपीज 4, फॉर रुपीज 4 नंबर ऑफ वोन फॉर रुपीज 4 कितना हुआ, इट इज 400 by 4, then it is 100 won, it is 100 won। next now rupees 400 equal to कितना हुआ बेटा, 400 into 100 is equal to, अब इसका पैसा कितना हुआ देखिए, it is 4 lakh, it is 40,000 पैसे, it is 40,000 पैसे। then अब ये 40,000 जो पैसे बेटा कि हाउ मेनी वोन कैन बी चेंज फॉर रुपीज 400 फॉर 40,000 पैसे। तो सो वी कैन राइट हियर सी नंबर ऑफ वोन फॉर रुपीज 400 इज इक्वल टू सी इट इज 40,000 बाय 4, so it is equal to 10,000, is equal to 10,000 won, yes, is equal to 10,000 won। any doubt? now next question is how many HK dollar can be changed for rupees 508। तो 508 रुपीज में HK डॉलर कितना होता है, तो सी 1 HK डॉलर is equal to rupees 5.10 is equal to rupees 5.10। तो इसमें क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हुआ, इट इज 510 पैसे हुआ, ये आपका कैसे हुआ, इट इज 510 पैसे हो गए ना। एंड देन रुपीज 508 इक्वल टू, इसको भी कन्वर्ट करें पैसे में, 508 इंटू 100 देन इज इक्वल टू 50800 पैसे, इट इज पैसे। ये देखिए दोनों पैसे हुआ, ये इसका वैल्यू हुआ 1 HK डॉलर इक्वल टू 510 पैसे एंड 508 इज इक्वल टू 50800 पैसे, ये हुआ। अभी नंबर ऑफ HK डॉलर, नंबर ऑफ HK डॉलर फॉर रुपीज
508 is equal to 508 is equal to, so see it is 50800 by it is 510. Now you divide here, see 50800 and it is 510. डिवाइड करते आइए, 9 से हो जाएगा शायद 500945. Then see divide here, it is 0, subtract करने से 18 minus 9 9, then it will be 6, then 4 6 and it is 0 and then again this 0, it is again 9, to see it is 4590, so it is about 0 1 then 3 and 0, so it is about 99 point something answer आएगा. So you can write here 99 HK डॉलर, इसमें अप्रोक्सीमेटली बेटा इट इज अप्रोक्सीमेटली मतलब नियर अबाउट $99 मिल जाएंगे. आफ्टर 99 also 310 पैसे बच रहे हैं यहाँ पर, तो सो $99 she can get. So this way in today's class we discuss about all these question of currency and their calculation. Thank you.